Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with a new chapter that is work, energy, and power. And in this lecture, I will focus on our first quantity that is energy. So let us start with the definition. What is energy? Energy is the ability to do work. In order to perform any sort of work or any sort of task, energy is required. For example, as a human being, for our survival, we need food. What is the purpose of having the food? Food provides us energy. So this is same for the non-living things, for any electronic devices. In order to run the electronic devices, we have to provide them the energy so that they can perform their particular task. तो जो वो एनर्जी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लाइक मशीन्स को इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को प्रोवाइड करते हैं दैट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एज एन ह्यूमन बीइंग जो हम खाना खाते हैं दैट फूड प्रोवाइड अस केमिकल एनर्जी so in order to perform any sort of task either it is a living thing or either it is a non-living thing they require the energy so that's why the energy is known as the ability to do work. The next point is that energy can changes from one form to another form. So this is like the basic principle on the of the earth कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है. वी नो कि अर्थ के ऊपर जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन. सन क्या करता है? सन हमें लाइट हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड प्लांट चेंजेस दैट लाइट हीट एनर्जी इनटू chemical energy by producing the food through photosynthesis एंड देन वो फूड हम कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं एनिमल्स कंज्यूम करते हैं एंड दैट फूड दैट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इज यूज फॉर द मूवमेंट फॉर द ब्रीदिंग पर्पसेस फॉर द स्पीच for all other activities. So this is that's why we say that the energy changes from one form to another form. The third point is that the energy has no direction, so it is a scalar quantity. हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स हैव the physical quantities are divided into two categories, the scalar and vector quantity. So energy is the scalar quantity. It means it has no direction. And the unit for the energy is joule. So this is the basic detail about the energy. The next comes the types of energy. Definitely there are different types of energies, but I had listed the few main types of energy जिनसे related MCQs आ जाता है या जिनको हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है. So the first form of energy is chemical energy. अब द क्वेश्चन इज कि केमिकल एनर्जी किन किन चीजों के अंदर स्टोर्ड होती है. तो केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन कोल ऑयल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स. वी कैन से कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. इसके साथ साथ द केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फूड विच वी ईट. फर्दर मोर जब हम कार जो आपकी कार बैटरीज होती हैं इन ऑर्डर टू रन देम और इन ऑर्डर टू ऑपरेट देम दे रिक्वायर्ड अ सेल, दे रिक्वायर्ड अ बैटरी. सो वो बैटरी और सेल के अंदर जो सी एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी. द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सभी फेमिलियर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कि इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी और विच इज एसोसिएटेड विद करंट इन मशीन. And the third type of energy is mechanical energy. This type of energy is further categorized into two different categories. The first one is kinetic energy and the second one is potential energy. We are going to discuss these energies in detail और यही दो आपकी energies है जिनसे related most of the questions इस chapter के base करते हैं. So अगर आपको एक general idea दूं मैं about the kinetic and potential energy, so there is whenever there is kinetic energy you just have to remind yourself one thing that kinetic energy is something that is related to the moving object. So whenever in a statement they had listed that the object is moving, so it means it is using kinetic energy. And the second form of the energy, which is potential energy, it is due to the height of the object from the surface of the earth. सो अब हम इन दोनों डेफिनेशंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं. आपको इसका फॉर्मूला याद करना, आपने इनका यूनिट याद रखना है, आपने इनकी डेफिनेशन याद रखनी है. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? देयर इज एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट इज एनर्जी ऑफ मोशन. जैसे कि मैंने पहले बताया कि whenever the object is moving it is using a certain type of energy. So that certain type of energy which is used by a moving object is known as kinetic energy. इसी तरह से सेम
The same thing is explained in the definition of kinetic energy. It is the energy due to the motion or the movement of object. So that's why we call the kinetic energy as the energy of motion. There are two quantities on which the kinetic energy is based. The first one is the mass of an object and the second one is the speed of the object. The formula for the kinetic energy is half mv square. So from the formula you can clearly identify that in kinetic energy is directly proportional. EK is directly proportional to mass, which means the greater the mass, the greater the kinetic energy. And the second thing is the kinetic energy is directly proportional to velocity square. So it means when the velocity of an object increases or an object starts moving with start moving fast or speedily, then it has more kinetic energy. So these are the two factors on which the kinetic energy is based. One is the mass and the second one is the speed. Since kinetic energy is also the type of energy, तो हम energy की definition के अंदर पढ़ के आए हैं कि for energy the unit is joule. So इस वजह से आपके पास जितनी भी types of energies आएंगी, they all have a same unit which is joule. The next is the gravitational potential energy. Gravitational potential energy, as the name suggests, it is the energy due to the position of an object. Position of the object से क्या मतलब है कि this is the earth and at this certain height the object is placed. So due to this certain height from the surface of the earth इस object के अंदर एक energy stored है and that energy is known as gravitational potential energy. जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में स्टडी किया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड द वेलोसिटी, same as the gravitational potential energy depends on two factors. It depends on two factors. The first factor is the mass and the second factor is the height. हमें कैसे पता चला कि ये इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इसके लिए हमें फॉर्मूला को डिटेल से देखना है. As the so the formula for the gravitational potential energy is mass into gravity into height, जिसको हम simply mgh कह सकते हैं, और you can write this formula as an alternative weight into height, क्योंकि हमें पता है कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. तो आप मास इनटू ग्रेविटी को वेट के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दिस फार्मूला एज वेल. ये आपको जो थोड़ी सी ये वेरिएशन है ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करे, क्योंकि बहुत से ऐसे एमसीक्यूज आएंगे वेयर दे हैड गिवन यू द वैल्यू ऑफ द वेट एंड दे आस्क फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो यूजुअली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट तो फॉर्मूला के अंदर था ही नहीं, बट मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वेट. सो आप इस फॉर्मूला को इस तरह से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. And the last thing, which is same for all type of energy, the unit for gravitational potential energy is joule. The last thing about the concept of energy is the principle of conservation of energy. This principle of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed, it just transfer from one form to another. जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर चेंज होती रहती है. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये इसी चीज को फर्दर एलेबोरेट करता है कि एनर्जी जो है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस, द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और इसी तरह से एक साइकिल के अंदर एक फ्लो के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है. सो दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है इट ऑलवेज रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूल, अगर हम कार में फ्यूल फिल इन करते हैं तो उस फ्यूल वो जो फ्यूल है कार में दैट इज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है, when the car runs or that chemical energy from the fuel will convert it into other forms of energy. अब उस गाड़ी ने मूवमेंट भी करनी है तो it means that chemical energy from the fuel is changing into the kinetic energy क्योंकि मूवमेंट हो रही है. फर्दरमोर वो कार जो है वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, साथ साथ वो साउंड भी प्रोड्यूस कर रही है. तो इट मीन्स दैट केमिकल एनर्जी इज नॉट ओनली चेंजिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी बट इट इज चेंजिंग इनटू द
the sound energy to the heat energy to the thermal energy. और इस तरह से क्या होता है कि एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होती जाती है. इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे फॉर द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. अगर हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करें तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के अंदर वी यूज दी potential energy stored in the water into kinetic energy and then into the electrical energy. देखिए आप क्या करते हैं, हमारे पास डैम्स में एट द हाइट वाटर स्टोर होता है. ठीक है, डैम जो है वो हाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैव पोटेंशियल एनर्जी. सो वो पानी फ्लो जब करता है टुवर्ड्स द लोअर सरफेस तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि द वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, that the flow of the water and the kinetic energy is used to move the turbine. ठीक है, आगे आपके पास टर्बाइन होते हैं एंड दैट टर्बाइन वो फर्दर उस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं. देन दीज टर्बाइंस आर कनेक्टेड विद जनरेटर्स और वो जनरेटर्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. ठीक है, so this is how the energy is converted from one form to another. So there are like few examples जो examiner आपसे इन question से related पूछ लेते हैं and they ask कि what are the overall energy conversion. तो वो बहुत easy MCQs होते हैं. इंशाल्लाह next video के अंदर वो मैं आप लोगों के साथ MCQs भी share करूंगी. So अभी हम फिलहाल इस example को देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे display की हुई है. So you have a car which is present at the base of the hill. At this point, it has highest kinetic energy and it has lowest potential energy. Definitely ये car पीछे से travel करते हुए आ रही है. So due to the movement, as we know that when an object is moving, it has one type of energy which is kinetic energy. So as it start moving up the hill and reaches to the top of the hill, all of the kinetic energy will convert into the potential energy. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे at the base it has maximum kinetic energy and it has nil means zero potential energy. But when it reaches the top of the mountain, it has maximum potential energy and it has zero kinetic energy. It means कि at the base जितनी भी उस कार के अंदर kinetic energy थी, it has converted into the potential energy. And as it start moving downwards and reaches to the midpoint of the way, it has half potential energy and half kinetic energy. क्यों? क्योंकि इस point पे it is moving, it means it has kinetic energy. Furthermore, it is present at the certain height. तो अगर कोई object height पे present है, तो it means it has the potential energy. So this is the basic concept of the energy. These are the few things जो आपको MCQs और theory questions के लिए required है. So please go through this chapter and go through these notes, this video, and if you have any problem, do ask me.